हाय गाइज, वेलकम बैक टू द डायरी ऑफ एन इंडियन मॉम। आज मैं एक ऐसा वीडियो बना रही हूँ जो बहुत इम्प्रॉम्प्टू है एंड आई एम डूइंग समथिंग विच आई डोंट यूजुअली डू, बट दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन अ कमेंट दैट आई गॉट इन फैक्ट जस्ट रेड एंड मुझे लगा आई फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस एंड आई थॉट आई वॉन्ट टू पुट दिस आउट देयर। आई फर्स्ट थॉट ऑफ मेकिंग अ कम्युनिटी पोस्ट बट मुझे लगा शायद वो जस्टिस नहीं करेगा, so I put out a short video around I think 2 weeks back which was for working moms कि अगर आप working mom हो तो don't feel guilty about it and remember these 5 things. Now I got a comment on this and this is not a hate comment, it's a very sweet comment, so don't take it otherwise, but I know where this comment is coming from and the thought process behind that comment and you know how the society has actually brainwashed us to think like that is something which really bothers me. यानी ये चीज़ मैंने पहले भी बहुत बार सुनी है अपनी बहुत सारी चीज़ों पे पोस्ट्स पे and I really want to address it right here. So basically the comment is that we can teach the kids the meaning of equality by not categorizing women as working moms or stay at home moms. I think both are working and the difference is just the environment, either home or office. Working in office gives us a direct source of income and working at home gives us an indirect. We never stress on working dad, then why this whole fuss about working moms? Okay, so now this is a very common thing on social media जो बहुत लोग कहते हैं and you know I don't know why people start taking offense when someone is addressed as a working mom or a stay at home mom. I really want to tell you guys कि क्यों, यानी the tags should not bother us. वर्किंग का मीनिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो काम कर रहा है दूसरा इंसान बिस्तर पे पड़ा हुआ है. वर्किंग इज़ अ टर्म यूज्ड फॉर एनीवन हु इज़ गोइंग आउट टू वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेटअप, इन अ बिजनेस सेटअप, बेसिकली डूइंग समथिंग अदर देन जो घर पे हम काम करते हैं वो. इन रियल लाइफ एवरीवन इज़ वर्किंग. इवन माई 3-year-old बॉय जो बैठ के अपने खिलौने से खेल रहा है, इट्स वर्क फ्रॉम हिम. आई डोंट कॉल हिम अ वर्किंग चाइल्ड बिकॉज दैट्स नॉट द कंसेप्ट और द real meaning of the term working. Now having said that, मैं ये भी जानती हूँ कि ये हम लोगों को क्यों बॉदर करता है. हम लोगों को इसलिए बॉदर करता है कि कहीं ना कहीं अंदर हम लोगों को ये बात घुस गई है कि स्टे एट होम मॉम्स आर लेसर देन वर्किंग मॉम्स. एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस टर्मिनोलॉजी, डोंट माइंड. इट इज़ द टर्मिनोलॉजी जो कि इट्स अ डिस्क्रिप्टिव वर्ड, जस्ट लाइक I am a tall girl, so it's a descriptive word. Action verb or an adjective is something which will describe what your current stage of life is. Working mom or a working person is someone who's going out and working. As simple as that. And the whole point of making this video is not to explain you कि क्यों ये term use किया है मैंने, but to tell you कि ये अपने दिमाग से निकाल दो जिन लोगों ने आपके दिमाग में द सोसाइटी दैट हैज़ फेड इट इन योर माइंड दैट वर्किंग इज़ बेटर देन स्टे एट होम. हम क्यों ऑफेंड होते हैं? क्योंकि जिस पॉइंट पे हमको वर्किंग मॉम एड्रेस किया जाता है बाकी की मॉम्स को लगता है कि वी आर लेसर, वी आर स्टे एट होम मॉम्स एंड दे आर बीइंग कॉल्ड वर्किंग. हम भी घर पे काम करते हैं. सो दैट इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, बट वर्किंग का मतलब वो नहीं है इन दिस रेफरेंस. The other point कि why don't we call a working man or a working dad a working dad, because we don't have enough stay at home dads. तो in general जो भी dads है are by default हमारे अंडरस्टैंडिंग में गोइंग आउट एंड वर्किंग और अर्निंग अ लाइवलीहुड फॉर द फैमिली. जिस पॉइंट पे ये चेंज आ जाएगा हमारी सोसाइटी में वेयर वी विल हैव 10%, 20%, 30% dads who are not working taking care of their kids at home and the mothers are working instead, they will be called stay at home dad. तो this is just a tag and हम लोग इसलिए नहीं अभी बुला पा रहे dads को stay at home dads because we don't have any. How many dads do you know जिनको हम लोग stay at home dads कह सकते हैं? अगर निशित sits down and decides कि now I don't want to work, I want to spend time with my kids, I want to raise them, and जो भी हमारे पैसिव सोर्सेज ऑफ इनकम या तुम्हारी जो भी अर्निंग है उससे we will run the family, then he will be the stay at home dad. So which is completely fine, there is nothing wrong in either of the tags. तो प्लीज़ किसी को ये बिलीव मत करवाने दो अपने आप को कि इफ़ यू आर बीइंग कॉल्ड अ स्टे एट होम मॉम यू आर लेसर और यू आर नॉट डूइंग एनी वर्क और योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज एनी लेस देन एनी वन एल्स. डोंट गेट हैसल्ड बाय दैट. डोंट मेक योर सेल्फ बिलीव दैट कि मैं बाहर जाके कमा नहीं रही हूँ तो मैं एनी लेसर देन एनी वन हु इज़ गोइंग आउट एंड अर्निंग हूँ. इट्स जस्ट अ वर्ड विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब someone's current stage of life. So that's all.
एंड हैविंग सेड दैट, यानी मैंने बहुत पहले इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था वेयर आई हैड रिटन अबाउट हाउ स्ट्रांगली आई फील अबाउट ऑल द थिंग्स दैट स्टे एट होम मॉम्स डू, एंड इट्स सो अमेजिंग. यानी आई रीड आउट दैट पोस्ट ऑल्सो एट द एंड ऑफ इट to kind of empower you to feel better about yourself for being a stay at home mom. इस पूरे जो डिबेट में वर्किंग और स्टे एट होम के बीच में जो डिबेट है, उसमें इश्यू जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं वो नहीं है. उसमें इश्यू हमारा जो कंडीशनिंग है, वेयर वी पुट वर्किंग मॉम्स एट अ पेडेस्टल और समवन हु इज गोइंग आउट एंड अर्निंग मनी एट अ पेडेस्टल एंड समवन हु इज नॉट अर्निंग मनी एट अ लोअर लेवल, थिंकिंग के दे आर लेसर देन दिस, इज़ रॉन्ग. और ये हम लोग अंदर से भी बिलीव करते हैं. और हम लोग क्यों ऑफेंड हो जाते हैं बार बार? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं अंदर से कि एक्चुअली हम कम कर रहे हैं. तो पहले ये हमारे दिमाग से हटाना ज़रूरी है. हम लोग सोसाइटी को इमीडिएटली चेंज नहीं कर सकते, बट स्टार्ट विथ योर सेल्फ. स्टार्ट फीलिंग बेटर एंड प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट यू आर अ स्टे एट होम मॉम और a stay at home person who's made that choice, और बी प्राउड ऑफ दैट चॉइस एंड डोंट कंसिडर योर सेल्फ एनी लेसर. तो आपको बॉदर नहीं करेगा, या आप डीपर मीनिंग्स नहीं ढूंढने लगोगे इस बेसिक जो लिंग्विस्टिक चीज़ें हैं उसके पीछे के. सो दैट इज़ वन थिंग. Another thing, if it's not a choice that you made, but it was out of some compulsion, and if you don't feel happy about it, change it. That is also fine. But इन सारी चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट मत करो, या ये सोचने में मत करो कि ऐसा टैग क्यों दिया जा रहा है आपको. What I responded to her is a very long response. I'm not going to read out the entire thing. But मैंने 2 simple examples दिए कि today my dad is retired, okay? Or someone asks him that are you a working man? Then he will say no, I'm not a working man. I am a retired person, right? तो हम लोग क्या ऑफेंड होंगे वहाँ पे, या विल ही गेट ऑफेंडेड? नो, बिकॉज ही इज जस्ट डिस्क्राइबिंग हिज करंट स्टेज ऑफ लाइफ कि नाउ आई एम नॉट वर्किंग इन अ गवर्नमेंट और अ कॉर्पोरेट सेटअप. नाउ आई एम रिटायर्ड. ही इज स्टिल डूइंग घर का सारा काम. ही इज डूइंग ऑल द गार्डनिंग. ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ. ही इज गेटिंग द ग्रॉसरीज. ही इज डूइंग ऑल द वर्क दैट is required to be done. Everyone otherwise in this world is working at some level, but here the purpose of using this term, the term has been coined for someone who goes out and works, and in no way is that person superior than the person who is staying at home and working and doing other things and making sure कि वो घर पे है, इसलिए बाहर जो जा रहा है वो इंसान शांति से अपना काम कर पा रहा है, ज़्यादा पैसे कमा पा रहा है, उसको चिंता नहीं करने पड़ रही है अपने घर की, which is a big thing, and that is what you should be proud of rather than getting worried. And I'm going to read this post so that all the stay-at-home moms feel proud of the fact that they are stay-at-home moms. This is so unlike me. I don't do this, but this really kind of bothers me. मैंने बहुत बार सुना है, every single time I feel कि हम लोग ने कहीं इसको taboo, it's like it's a cuss word that we are using. Stay at home mom is not a taboo. It's a description of what you do currently in life. तो हम उसको क्यों taboo की तरह treat कर रहे हैं कि मुझे stay at home mom बोल दिया या किसी को categorize कर दिया working mom की तरह. There is no deeper meaning to that. Maybe the society at some level might have, but हमारा purpose should not be to change that tag. Our purpose should be to consider both the tags equally important and be proud of both of them. Then it will not matter at all. ठीक है. So the post is a letter to a stay-at-home mom from a working mom. This was something that I had written way back in 2018. Okay, so I have always stood by this, and मैं आप लोगों को भी empower करना चाहती हूँ. I sit down to write this because over the last couple of months, I have had a chance to interact with so many fellow moms through this platform. A part of them being stay-at-home moms, and I have a newfound respect for stay-at-home moms. While I always thought before and through my pregnancy that being a working mom is difficult, I suddenly realized that being a stay-at-home mom is equally challenging, or maybe more. It is isolating and it is lonely. Though you physically never really are alone, but you feel alone all the time. While we manage to close our eyes and switch off for a bit, listening to some calming music on our way to work, you probably are busy trying to get the baby to nap. While we manage to get a designated lunch hour, at least on some of the days, you probably are struggling to gobble up your meal while running behind your kid every single day. While we feel guilty of leaving our crying kid behind as we leave for work, you are struggling with the guilt of giving your cell phone to the kid as a trade for taking a quick loo break, bathroom break, or the guilt of eyeing an expensive handbag for yourself while you aren't getting that steady paycheck. And while we finally say thank God it's Friday, you still are reluctant to ask for help from your partners over the weekends
because they had a tiring week at work, and because apparently you were at home all week. I admire your infinite patience and dedication without expecting any rewards, promotions, salary, or even appreciation. I don't want to term this as a sacrifice from your side because I know you won't trade these days for the world, and you indeed are superheroes in pajamas, if not a cape. और इसके नीचे भी मैंने ये डिस्क्लेमर डाला है फॉर द सिंपल रीजन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी हर्ड सो मच ऑफ इट. PS, the words working mom and stay at home moms are just terms used here with no intention to tag or categorize moms. So the point here is I've always felt very proud of stay at home moms, and you should too, and you should not get into this चक्कर of thinking कि अरे इसको working mom बुला लिया, इसको categorize कर दिया stay at home mom, that means she is lesser, या कहीं ना कहीं हम इनको pedestal पे डालने की कोशिश कर रहे हैं, glorify करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा नहीं कर रहे हैं. Working moms do have a lot of struggles which are, I am not saying more than stay at home moms, but are equal and different फ्रॉम स्टे एट होम मॉम्स. तो जब भी मुझे बात करनी होगी इस कैटेगरी ऑफ मॉम्स के बारे में जिनके एक्स स्ट्रगल्स है rather than इस कैटेगरी ऑफ मॉम्स जिनके वाई स्ट्रगल्स है, then I will use the term working mom without feeling any kind of guilt. And when I talk about this set of moms, I will talk and term them as stay at home moms with equal pride, and so should you. Anyways, बड़ा रैंट हो गया, क्यों किया पता नहीं, बाद में शायद मैं एडिट करके डालूँ भी नहीं, बट आई रियली वॉन्टेड टू टेल दिस टू ऑल ऑफ यू मॉम्स. डोंट फील लेस अबाउट योर सेल्फ बिकॉज ऑफ XYZ थिंग्स दैट यू आर डूइंग इन लाइफ. हमारा करियर या हमारी अर्निंग्स आर नॉट आर आइडेंटिटी. वी एड वैल्यू इन सो मैनी डिफरेंट वेज, एंड दैट्स वॉट यू शुड बी वरीड अबाउट. एंड अपने बच्चों को भी when you bring them up, when you talk to them, always talk about your role with pride. Always ask your partner, यानी उनको आप उनसे बात करो, let your partner speak to them with all that pride, and then your kids will also look at you with pride, and they'll also understand कि यार ये जो किया है वो छोटा काम नहीं है, वो बहुत बड़ा काम है. Not many can do it without help. So it's something that you should be proud of. And from my experience, मैंने जितने आजकल के लोग देखे हैं जिनकी मॉम्स ने अपने करियर्स को पीछे रखा था, या they were in general stay at home moms, they feel extremely proud of them कि मेरी मम्मी हमेशा हमारे साथ होती थी. whenever we needed her, she was always there around us, and things like that. So there are so many advantages and so many ways in which kids actually look up to you because of what you did. So don't feel bad about it. But like I said, if it's not a choice that you made because you wanted to make it, then change it. Anyways, chalo bye bye, मेरा उठ गई है.